ओके। तो आ जाओ सभी लोगों। ओके, सो कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो क्योंकि हम अभी जे कृष्णमूर्ति के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जे कृष्णमूर्ति की सीरीज़ हम लोग ले रहे हैं, तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और उसी प्लेलिस्ट के अंदर हम ये सारी लाइव स्ट्रीम्स करेंगे। और ये सारी जो लाइव स्ट्रीम्स हैं वो आप लोगों को वहीं पर देखने के लिए मिलेंगी, अगर आप दोबारा से रिपीट करके इसे देखना चाहते हैं तो। आई होप कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑलमोस्ट 22 मिनट का ये वीडियो देख लिया है। कैप्शंस ऑन कर देते हैं। Which brings about this chaos. Yes, I'm following that very he closely. is the world and the world is him. Yes. Therefore, if he changes, The whole thing everything is changes. If he doesn't change, the thing, nothing right? changes. That's right. I think this is very important because we don't realize, I think, this basic factor that we are the world and the world is us. That the world isn't something separate from me and me separate from the world. You're born in a culture, Christian or Hindu or whatever culture you're born in, you are the result of that culture. And that culture has produced this world. The materialistic world of the West, if one can call it, which is spreading all over the world, destroying their own culture, their own traditions. Everything is being swept aside in the wake of the Western culture. And this culture has produced this human being. And the human being has created this culture. Exactly. I mean, he has created the painting, the marvelous cathedrals, the marvelous technological things going to the moon and so on, so on. So human beings have produced it. It's the human beings that have created the Russian society in which we live. It's the immoral society in which we live, which human beings have created it. Oh, yes, there's no way to deny that. And therefore, the world is you, you are the world. There is no other thing. If we accept that, if we see that, not intellectually, but feel it in your heart, in your mind, in your blood that you are that, then the question, is it possible for a human being to transform himself inwardly and therefore outwardly? I'm very concerned to see this as clearly as I can in terms of two texts that come to my mind, which we could say possess an inner meaning. And because of this inner-outer thing that we've spoken about in the divided approach that is made to Scripture, there's a tremendous irony here. Yes. I'm thinking of that, to me, wonderful text in St. John's Gospel, in 3rd chapter, which says, and I'll try to translate this as the Greek has it, the one who is doing the truth is coming to the light. It isn't that he does the truth and then later he comes to the light. And it isn't that we could say from the pulpit, I will tell you what the truth is. If you do it, then you'll see the light. Because we're back again to what you mentioned earlier, the non-temporal relationship between the action, which itself is the transformation, Yes, correct,
and the marvelous vista of understanding, which is not an if-then thing, but is truly concurrent. And the other one that I thought of that I was hoping you might agree in is saying the same thing, so that I understand it well in terms of what you've said, is, and again I'll try to translate it as literally as I can. God is love, and the one abiding in love is abiding in God, and God is abiding in him. Correct. I put the ing on all those words because of the character of the language itself. It doesn't read too, one wouldn't want to translate that for pulpit reading, perhaps, but that's the real sense of it. And this inging along gives the feeling that there's an activity here. Oh, that is not bound by it temporal isn't a relations. static state. It isn't something you intellectually accept it and leave it like that. Then it's death. There is nothing in it. Yes. That's why, you see, sir, we have divided the physical world as the East and the West. We have divided religions, Christian religion, and Hindu, Muslim, Buddhist. And we have divided the world into nationalities. The capitalists, the socialists, the communists, and the other people. So we have divided the world, and we have divided ourselves as Christians, non-Christians. Yes. We have divided ourselves into fragments, opposing each other. So where there is a division, there is conflict. Precisely. I think that's a basic law. Where there's a division, there's conflict, but in terms of that word knowledge, it appears that people believe to start with that division is there. Yeah, and they operate on that radical belief, isn't that's that right? why I'm saying it's so important to understand from the beginning in our talk, in our dialogue, that the world is not different from me and I am the world. It may sound rather simple, very simplified, simplistic, but it has got very deep fundamental meaning if you realize what it means. Not intellectually, but inwardly, the understanding of it. Therefore, there is no division. Moment I say to myself, and I realize that I am the world, the world is me, I am not a Christian nor a Hindu nor a Buddhist, nothing. I am a human being. I was just thinking when you were saying that how certain kinds of philosophical analysis would approach that, and in terms of the spirit of what you've said, this really is almost a cosmic joke, because on the one hand, as you said, it might sound simplistic. Some would say it is. Therefore, we don't have to pay attention to it. Others would say, well, it's probably so much in want of clarity, even though it's profound, that it's some kind of mysticism out here. I know, and we're back and forth with the division again. As soon as that happens. That's right. Yes, I do follow you. So, if that is clear, that that human mind has divided the world in order to find its own security, which brings about its own insecurity. When one is aware of that, then one must inwardly as well as outwardly deny this division. As we and they, I and you, the Indian and the European and the communist, you cut at the very root of this division. Therefore, from that arises the question, can the human mind, which has been so conditioned for millennia, can that human mind, which has acquired so much knowledge Yes. in so many directions, can that human mind
change, bring about a regeneration in itself, and be free to reincarnate now. 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 Yes. That is the That's the question. question. Exactly. Reincarnate Now. now. It would appear from what you've said that one could say that the vast amount of represented knowledge and accretion of centuries is a discussion we've been having with ourselves, regardless of which culture we're speaking about, as a commentary on this division. Absolutely. Without really grasping the division itself. Yeah. And of course, since the division is infinitely divisible, Of course. The moment you divide, go on division. exactly, then we can have tome after tome after tome, libraries after libraries, mausoleums of books without end, because we're continually dividing the division. That's right. Yes, yes, I follow you. And you see, that's why culture is different from civilization. Culture implies growth. Oh, yes. Oh, yes. Now, growth in the flowering of goodness. A lovely phrase. Lovely phrase. That is culture. The Real flowering of culture. goodness. The flowering in goodness. You understand, sir? Yes. And that doesn't exist. We have civilization. You can travel from India to America in a few hours. You have better bathrooms, better this and better that, and so on, with all the complications that it involves. That has been the Western culture which is absorbing the East now. So, the goodness is the very essence of culture. Religion is the transformation of man. Not all the belief churches and the idolatry of the Christians or the Hindus. That's not religion. So we come back to the point. If one sees all this in this world, observes it, not condemn it or justify it, just to observe it, then from that one asks, man has collected such enormous information, knowledge, and has that knowledge changed him into goodness. You follow? I follow. Into a culture that make him flower in this beauty of goodness. It has not. No, it has not. Therefore, it has no meaning. Excursions into defining goodness is not going to help us. I mean, that you can give explanation, one definition, but that's not, definitions are not the reality. No, of course not. The word isn't the thing. The description isn't the described. Precisely. So, we come back again. Yes, let's do. Because I personally, I'm tremendously concerned with this question. How to change man? Because I go to India every year for 3 months or 5 months, and I see what's happening there, and I see what's happening in Europe, I see what's happening in this country, America, and it's something, I can't tell you what shock it gives me each time I come to these countries. The degeneration, the superficiality, the intellectual concepts galore, without any substance, without any basis or a ground in which the beauty of goodness, of reality can grow. Now, so saying all that, what place has knowledge in the regeneration of man? That is the basic question.
That's our point of departure. Departure. Good. And the knowledge that we have pointed to so far, that has emerged in our discussion, is a knowledge which in itself has no power to effect this transformation. No, sir, but knowledge has a place. Yes, I didn't mean that. I mean, what is expected of this knowledge that we pointed to, that is accumulated in libraries, is an expectation which it in itself cannot fulfill. No. I must go back to the word again. The word knowledge. What does it mean to know? Well, I have understood the word in the strict sense this way. Knowledge is the apprehension of what is, but what passes for knowledge might not be that. No, what is generally accepted as knowledge is experience. Yes, what is generally accepted. We'll begin with that, because right. that's what... Let's begin with what is generally accepted. Experience, which yields or leaves a mark which is knowledge. That accumulated knowledge, whether in the scientific world or in the biological world or in the business world or in the world of the mind, the being, is the known. The known is the past. Therefore, knowledge is the past. Knowledge cannot be in the present. I can use knowledge in the present. But it's funded from the past. Yeah, but it has its roots in the past. Yes, I follow. Which means, that's very interesting, whether this knowledge which we have acquired about everything. Mm-hmm. Yes. You read any, I personally don't read any of these books. Neither the Bhagavad Gita, Upanishads, none of the psychological books, nothing. I'm not a reader. I have observed tremendously all my life. Now, knowledge has its place. Mm-hmm. Oh, yes, yes. Let's be clear. Yes. That's oh, yes, in the practical order. Practical, technological. Exactly. I must know where I'm going. Precisely. Physically and so on, yes, so on, so yes. on. Now, what place has that, which is human experience as well as scientific knowledge, what place has that in changing the quality of a mind that has become brutal, violent, petty, selfish, greedy, ambitious, and all the rest of that? What place has knowledge in that? Well, going back to the statement we began with, namely that this transformation is not dependent on knowledge, no. Then the answer would have to be, it doesn't have a place. Therefore, let's find out what are the limits of knowledge. Yes, yes, of course. Where is the demarcation? Freedom from the known. Yes. Where does that freedom begin? Good. You understand? Yes, now I know precisely the point at which we're going to move from. Yeah. Where does that freedom begin? Begin. Which is not dependent on this funded accretion from That's the past. right. So, human mind is constructed on knowledge. Yes. Has evolved through millennia on this accretion, on tradition, on knowledge. Yes. It is there. And all our actions are based on that knowledge. Which by definition must be repetitious. Obviously. Of course. And it is repetitious. Mm-hmm. So, what is the beginning of freedom? In relation to knowledge? May I put it this way, make Yes. myself clear? Yes.
have experienced something yesterday that has left a mark. That is knowledge. And with that knowledge, I meet next experience. So the next experience is translated in terms of the old. And therefore, that experience is never new. So in a way, if I understand you correctly, you're saying that the experience that I had yesterday, that I recall, recollection, yes. Recollection, upon my meeting something new, that appears to have some relationship to it, I approach on the basis of holding my previous knowledge up as a mirror in which to determine the nature of this new thing that I have confronted. Quite. Yes. And this could be a rather crazy mirror. Generally it is. So, you see, that's what I mean. Yes, I follow. Where is the beginning, or where is freedom in relation to knowledge? Or is freedom something other than the continuity of knowledge? Must be something other. Which means, it's if one goes into it very, very deeply, it means the ending of knowledge. Yes. And what does that mean? What does it mean to end knowledge? Whereas I have lived entirely on knowledge. It means that immediately. I mean, see what is involved in it, sir. I met you yesterday, and there is the image of you in my mind. And that image meets you next day. Yes. The image meets you. The image meets me. And I have a dozen images, or 100 images. So the image is the knowledge. Mm-hmm. The image is the tradition. Mm-hmm. The image is the past. Now, can there be freedom from that? If this transformation that you speak of is to happen, is to come to pass, there must be. Of course. Therefore, how is we can state, but how is the mind which thrives, acts, functions on image, on knowledge, on the known? Mm-hmm. How is it to end that? Yes. How am I? Take this very simple fact. You insult me or praise me. That remains a knowledge. Mm-hmm. With that image, with that knowledge, I meet you. I never meet you. The image meets you. Exactly. Therefore, there is no relationship between you and me. Yes, because between us, this has been interposed. Obviously. Yes. Therefore, how is that image to end? Never to register. You follow? I can't depend on someone else to end it for me. Therefore, what am I to do? How am I? How is this mind, which is registering, recording all the time, is the brain, function of the brain is to record all the time. How is it to be free of knowledge? Mm-hmm. When you have done some harm to me, personally or collective, whatever way, you have insulted me, you have flattered me. How is the brain not to register that? If it registers, it's already an image. It's a memory. And the past then meets the present. And therefore there is no solution to it. Exactly. I was looking up that word the other day in a very good dictionary, tradition. Mm-hmm. It means, of course, ordinary word, tradare, is to give, hand over, give across. But it also has another peculiar meaning, not peculiar, from the same word, betrayal.
Oh yes, traduced. Tradu. And in discussing in India, this came out, betrayer of the present. If I live in tradition, I betray the present. Yes, I do see that. Which is knowledge betrays the present. Which is, in fact, a self-betrayal. Yeah, that's right. Yes, So, yes. how is the mind which functions on knowledge? How is the brain which is recording all the time Yes. to see the importance of recording and not let it move in any other direction? That is, let me put it this way, very simply, you insult me, you hurt me by word, gesture, by an actual act. That leaves a mark on the brain, which is memory. Yes. That memory is knowledge. That knowledge is going to interfere in my meeting you next time, obviously. Now, how is the brain, and also the mind, how is the brain to record and not let it interfere with the present? Well, the person must, it seems to me, take pains to negate. No, see what is implied, I know, but see, how am I to negate it? How is the brain whose function is to record, like a computer is recording? Yes. I didn't mean to suggest that it negates the recording, but it's the association, the translation of the recording into an emotional complex. How is it, that's just the point, how is it to end this emotional response when I meet you next time who have hurt me? That's the problem. That's the place from which we, in the practical order, in our relation to ourselves, must then begin. Yeah. Exactly. There is an aspect of this that interests me very much in terms of the relation between the theoretical and the practical. So to me, theory has no reality. Well, let me put it this way. Theories have no importance to a man who is actually living. May I say what I mean by theory? I don't think I mean what you think I mean by it. I mean theory in the sense of the Greek word theoria, spectacle. What is out there that I see. And the word is therefore very closely related to what you've been talking about in terms of knowledge. And yet it is the case that if we see something, that something is registered to us in the mind in terms of a likeness of it. Otherwise, we should have to become it in order to receive it, which in the material order would annihilate us. It seems to me, if I followed you correctly, that there's a profound confusion in one's relationship to that necessity for the finite being and what he makes of it. And insofar as he's making the wrong thing of it, he's in desperate trouble and can only go on repeating himself. And in such a repetition, increasing despair. Have I distinguished this correctly? You see, religion is based on tradition. Religion is vast propaganda, as it is now. In India, here, anywhere else, propaganda of theories, of beliefs, of idolatry, worship. Essentially based on the acceptance of a theory.
Yes. Yes. Essentially based on an idea. A statement, a postulate. I mean, they're Oftentimes. ideas Yes. put out by thought. Right. And obviously, that's not religion. And so, religion as it exists now is the very denial of truth. Yes, yes, I'm sure I understand you. And if a man like me or like wants to find out, discover what the truth is, he must deny the whole structure of religion as it is, which is idolatry, propaganda, fear, Yes. division, you're Christian, I mean, all that nonsense. And be a light to oneself. Not in the vain sense of that word, or light, because in darkness, the world is in darkness. And a human being that has to transform himself has to be a light to himself. And light is not lit by somebody else. So there's a point at which he must stop repeating himself. Is that correct? Correct. In a sense, we could use the analogy perhaps from surgery. Something that has been continuous is now cut. Yes. And cut radically. Not just fooled around, So but really cut. we haven't time to fool around anymore. Exactly. The house is on fire. At least I feel this enormously, that things are coming to such a pass, we must do something, each human being. Not in terms of better houses, better security, more this and that, but basically to regenerate himself. But if the person believes that in cutting himself from this accretion, that he is How can you killing cut? himself, then he's going to resist that idea, isn't he? Of course, of course. Therefore, he has to understand what his mind has created. Therefore, he has to understand himself. So he starts observing And himself, himself. which is the world. Yes. Not learning 5 languages to And be of able to God's sake, construe. that's all I know about. No. Yes, yes. Of going to schools where you learn sensitivity and all that rubbish. The point that you're making, it seems to me, is made also by the great Danish thinker Kierkegaard, who lived a very trying life in his own community, because he was asking them, it seems to me, to undertake what you're saying. He was saying, look, if I go to seminary and I try to understand what Christianity is by studying at my desks, then what I'm doing is appropriating something here. But then when do I know when I've appropriated it fully? I shall never know that point. Right. Therefore, I shall forever appropriate it and never do anything about it as such, as a subject. The person who must risk the deed, not the utterance of what someone has said before, or not simply thinking through what someone has thought before, but actually embodying the meaning through the observation of myself in relation to that. Quite. And that has always seemed to me a very profound insight. But one of the ironies of that is, of course, in the academy we have an endless proliferation of studies in which scholars have learned Danish in order to understand Kierkegaard. And what they're doing is, to a large extent, if I haven't misjudged the spirit of much that I've read, is simply perpetuate the very thing he said should be cut. I do have this very strong feeling that
profound change would take place in the academy, of which you know I'm a member. Quite. If the teacher were not only to grasp this that you've said, but take the risk of acting on it, since if it isn't acted on, if I've understood you correctly, we're back again where we were. We have toyed with the idea of being valiant and courageous, but then we have to think about what's involved before we do, and then we don't do. Right, quite. We think and don't do. Therefore, sir, the word is not the thing. The description is not the described. And if you are not concerned with the description, but only the thing what is, then we have to do something. When you are confronted with what is, you act. But when you are concerned with theories and speculations and beliefs, you never act. So there isn't any hope for this transformation, if I've understood you correctly, if I should think to myself, that just sounds marvelous. I am the world, and the world is me, while I go on thinking that the description is the described. There is no hope. So we're speaking about a disease over here, and we're speaking about something that has been stated as the case. And if I take what has been stated as the case, as the case, then I'm thinking the description is the described. Of course. And I never get out. Sir, it's like a man who is hungry. Any amount of description of the right kind of food and the beauty of the food, it will never satisfy him. He is hungry, he wants food. So, all this implies, doesn't it, sir? Several things. First, can there be freedom from knowledge? And knowledge has its place. Mm-hmm. Can there be freedom from the tradition as knowledge? From the tradition as knowledge, yes. Can there be freedom from this separative outlook? Me and you, we and they, Christians and all this divisive attitude or activity in life. Those are the problems we have to... That's what we must attend to as we move along, through yes. our dialogues. Yes. So first, can the mind be free from the known? I mean, not verbally, but actually. But actually, yes. I can speculate about. Can you please translate stated call to action in the description is not the described. Description is not the describe या call to action या जिसको उन्होंने बोला है अभी word is not the thing. वो वही है जो ये इतनी देर से जिसकी बात कर रहे हैं कि बेसिकली हमारा माइंड क्या करता है. हमारा माइंड कभी डायरेक्टली चीज़ों को नहीं देख पाता. उन्होंने बार बार इस कॉन्वर्सेशन में यही क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक माइंड या एक ब्रेन जो कि नॉलेज से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है, जो नॉलेज के ऊपर ही काम करता है, क्या वो फ्री हो सकता है पास्ट नॉलेज से? तो डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट द डिस्क्राइब्ड का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन पहले आ जाता है आपके दिमाग में. आपका दिमाग किसी भी चीज़ की तरफ देखता है तो उसे डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है तुरंत. क्या उस डिस्क्रिप्शन से छुटकारा है? क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन पास्ट है, पास्ट एक्सपीरियंस से बना हुआ है. आप फ्रेश एक्सपीरियंस से देख ही नहीं रहे उसे. यानी अगर आप अपनी वाइफ को या अपने फादर को या अपनी वाइफ की तरफ जब देखते हो, किसी की तरफ भी देखते हो, तो पहला ही आपका जो माइंड है वो पहले ये लेबल चिपका देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लेडी है वो मेरी वाइफ है या ये जो लेडी है वो मेरी मदर है. तो डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि उसे इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह से एक्ट करना चाहिए, ये उसकी मर्यादा है. क्या इस नॉलेज को साइड में रखा जा सकता है? क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन आपके अंदर चल रहा है वो कहाँ से आया? वो एक सोसाइटी की देन है.
वो सोसाइटी की नॉलेज से प्री ऑक्यूपाइड नॉलेज है। लेकिन एक्चुअल में आपके सामने कौन खड़ा है? एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है, भले ही वो आपकी मदर हो, वाइफ हो, आपके फादर हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है, आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, कोई भी है। एक्चुअल में वो कौन है? वो एक ह्यूमन बीइंग है। ये मतलब है डायरेक्ट देखने का, या यही मतलब है वर्ड इज़ नॉट अ थिंग का, या यही मतलब है डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट द डिस्क्राइब्ड का। आई होप थोड़ी बहुत कुछ हेल्प हुई होगी इससे। और वो बार बार इस चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे तो वो बार बार खुद भी ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि नॉलेज की भी अपनी जगह है, थॉट की, नॉलेज की, एक्सपीरियंस की। कृष्णमूर्ति की भाषा में मेमोरी हो, नॉलेज हो, थॉट हो, वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ की वो बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इसकी भी, ऐसा नहीं है कि ये बेकार चीज़ है, इसकी भी इम्पोर्टेंस है, इसकी भी यूटिलिटी है। आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, आप अपने रोज़मर्रा के काम इसीलिए कर पाते हो क्योंकि आपकी ब्रेन को चीज़ें याद रहती हैं, उसके पास मेमोरी है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप अपने घर वालों को इसलिए पहचानते हो, कलीग्स को, दोस्तों को इसलिए पहचानते हो क्योंकि आपके पास नॉलेज है। अगर नॉलेज ना हो तो आप भूल जाओगे, सबको भूल जाओगे। मेमोरी लॉस में क्या होता है? जब आदमी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी मेमोरी लॉस हो जाता है, तो क्या हो जाता है? वो पहचानना बंद कर देता है। तो उस नॉलेज की एक इम्पॉर्टेंस है। उसी नॉलेज की वजह से हमने बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स पाई हैं। लेकिन वही नॉलेज जो है वो एक समय के बाद आके आपकी डॉगमेटिक थिंकिंग भी बन जाती है, वही डॉगमेटिक थिंकिंग को जन्म भी देता है। वो प्रॉब्लम है उसके साथ, जब वो हर चीज़ के बीच में आके इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो आप किसी चीज़ का कर ही नहीं पाते हो। नहीं, अगर आप ये बोलोगे इससे छुटकारा मुश्किल है, तो फिर तो डिस्कशन का डेड एंड हो गया ना, डिस्कशन खत्म, फिर फायदा ही क्या है डिस्कस करके? फिर कृष्णमूर्ति यहाँ बैठे हुए डिस्कस क्यों कर रहे हैं अगर इससे छुटकारा पाना मुश्किल है? तो पॉसिबल है, इसीलिए तो बार बार डिस्कस करते हैं। What is freedom, what is all the rest of it. But see the necessity, the importance that there must be freedom from the known. मेहनत करना पड़ेगा, हाँ समझना पड़ेगा। मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा कि ये है क्या सारा खेल। सीरियस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपने आप से, सीरियस इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तब बात बनेगी। इसकी रियलिटी को देखना पड़ेगा, इसके नकलीपन को देखना पड़ेगा, इसके काम चलाऊपन को देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ काम चलाऊ है, ये नकली है, इसका एक लिमिटेड यूज़ है। अगर आप हर जगह इसको यूज़ करोगे तो ये काम बिगाड़ेगा। ये वही वाली बात है कि आप एक चाकू लेके कपड़ा सीने, चाकू का काम है, नॉलेज इज़ लाइक अ चाकू, चाकू का काम है, वो सब्जी कट करने के काम में आता है, लेकिन आप चाकू से कपड़े नहीं सी सकते। चाकू का काम है कट करना, डिवाइड करना, वही आपका ब्रेन करता है। इट्स लाइक अ शार्प नाइफ। तो शार्प नाइफ को आप, अगर आप शार्प नाइफ जैसी चीज़ को आप हर अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व करोगे तो क्या होगा? वो फिर कट कर, उसे तो कट करना आता है, वो हर चीज़ में कट करेगा। फिर रिश्तों में भी कट करता है, रिलेशनशिप्स में भी कट ही कर देता है, रिलेशनशिप्स भी तोड़ देता है। झगड़े हो जाते हैं ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में क्योंकि लोग दिमाग लगा लेते हैं। Otherwise, life becomes repetitive, continuous, superficial scratching. It has no meaning. Of course. In our next conversation together, I hope we can begin where we've just left off.
ओके, सो ये आज हम दूसरी कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, ये कॉन्वर्सेशन नंबर 2 है। आज हमने कॉन्वर्सेशन 1 को ही फिनिश किया है। कल का जो सेशन होगा उसके अंदर, कल की जो लाइव स्ट्रीम होगी उसमें मैं कॉन्वर्सेशन 1 को इंक्लूड करूँगा। और ये कितने टोटल, आई थिंक कुछ 18 कॉन्वर्सेशंस हैं ये। होपफुली इन 18 के 18 कॉन्वर्सेशंस को हम कवर अप कर पाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही काम की हैं और जितनी बार इनको देखा जाए रिपीट कर करके उतना थोड़ा है। कृष्णमूर्ति जैसे लोगों को सुनने का या ओशो जैसे लोगों को सुनने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि आप जितनी बार उन्हें सुनते हो, जब तक आपको बात समझ में नहीं आ जाती कम से कम, तब तक आप उन्हें जितनी बार सुनते हो उतनी बार एक नई बात आपको समझ में आती है। द स्टार्टअप आई वर्क फॉर जस्ट लेड ऑफ everyone but 3 devs. I am one of them who stayed, but I am still not impacted by it. I mean, I am still in my comfort zone despite the red flags. I don't get it why. Because mind को comfort zone पसंद है ना, माइंड एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहता, माइंड डरा हुआ है। डर उसकी सबसे बड़ी वजह है। कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है डर, क्योंकि कोई भी नई चीज़ ट्राई करने से उसे डर लगता है। मतलब आपने वो वाला एक एग्जांपल सुना होगा ना कि नई रिलेशनशिप में जाने से अच्छा लोग प्रेफर करते हैं पुरानी टॉक्सिक रिलेशनशिप को, क्योंकि नई रिलेशनशिप जो होती है वो अननोन होती है। पुरानी है, टॉक्सिक है भले ही, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जानी पहचानी तो है ना। वही वाला कंफर्ट जोन का वही कंफर्ट जोन है। पुरानी टॉक्सिसिटी नए अननोन से ज़्यादा अच्छी लगती है आदमी को, क्योंकि जानी पहचानी है। भले ही नुकसान कर रही है तो क्या हुआ। तो इससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है, और बाई चॉइस आने के लिए आपको ये कंफर्ट जोन त्यागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। कोई कल मैं डेली इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसे मेहनत की तरह देखोगे तो ये बोझ लगेगा। इसे इस तरह से देखो कि आपका माइंड फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो उसे कोई नया काम दो, नया प्रोडक्टिव काम दो करने के लिए। और ये तो अच्छा है कि आपको पता चल गया है, तो आपके पास एक डायरेक्शन है, तो अपने माइंड को कुछ काम दो करने के लिए, नए नई तैयारी पे उसे लगाओ। My mind try to brush everything off whatever I throw at it. This is the reason no goals stick long enough for my action to be consistent. माइंड का काम ही है ब्रश ऑफ करना यार, उसका काम है तुम्हें एक्शन, माइंड एक चीज़ समझो, माइंड का काम है तुम्हें एक्शन लेने से रोकना। वो तो चाहता है कि तुम पड़े रहो बस ऐसे ही। माइंड नहीं चाहता कि तुम कुछ करो, क्योंकि उसमें उसे अपनी एनर्जी बहुत प्यारी है, वो अपनी एनर्जी नहीं खोना चाहता, ख़ासतौर पे किसी कंस्ट्रक्टिव काम में। और अगर कंस्ट्रक्टिव काम में तुम अपने ब्रेन को नहीं लगाओगे तो डिस्ट्रक्टिव तो वो अपने आप बन जाएगा, और उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आबाद हो बर्बाद हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। उसके पास ये सोचने की शक्ति नहीं है, ये डिसीजन तुम ही ले सकते हो। विचार और भावनाओं में क्या संबंध है? विचार और भावनाओं में क्या संबंध है? विचार आपकी मेमोरीज हैं, और मेमोरी कंट्रोल करती हैं इमोशंस को।
विचार आते हैं आपकी मेमोरी से, और मेमोरी ट्रिगर करती है इमोशन को। जैसा विचार होगा वैसी ही मेमोरी ट्रिगर हो जाएगी। वो जैसा विचार होगा वैसी ही मेमोरी ट्रिगर होगी, और वैसी ही इमोशन ट्रिगर कर देगी, वो इमोशंस को ट्रिगर कर देगी। आपकी मेमोरी या विचार या थॉट, मेमोरी बोलो, विचार बोलो, थॉट बोलो, एक ही चीज़ है तीनों, ये इमोशन को ट्रिगर करते हैं। तो अगर आपको इमोशंस को डायरेक्शन देनी है, कंट्रोल तो आप नहीं कर सकते, डायरेक्शन दे सकते हो। इमोशंस को डायरेक्शन देनी है तो थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, थॉट पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। और थॉट पैटर्न्स को चेंज करने का एक ही तरीका है, राइट एक्शंस लेना। व्हाट इफ क्या हो, नो गोल्स आर डीम्ड बिग इनफ बाय लेजी माइंड। नहीं, बिग ड्रीम्स तो डराते हैं ना उसे, वो तो माइंड का काम ही है दिमाग में डाउट पैदा करना, क्योंकि वो एक्शन ले, वो पॉसिबल कोशिश करता है जिससे आप एक्शन ना लो, आप लेजी बने रहो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, माइंड को और कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसका सबसे अच्छा तरीका है डाउट क्रिएट करना, कि यार इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। इसीलिए तो कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आदमी का कर्म का रस जो है ना, करने का जो एक मज़ा था वो खो चुका है। आप बच्चे को देखोगे ना, तो बच्चे जो हैं वो कर्म करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें फल से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। उन्हें खेलने को मिल जाए वो उतना बहुत है। खेल, आप पूछोगे खेल के मिला क्या, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो राइट एक्शन का, अगर आप राइट एक्शन ले रहे हो, अब बच्चों का एग्जाम्पल सीरियसली मत ले लेना, वो सिर्फ मैंने कोरिलेशन बनाने के लिए दिया था। बट अगर आप डेली बेसिस पे राइट एक्शन ले रहे हो तो आपको फल की चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो कभी ना कभी फल अपने आप ठीक हो ही जाएगा। राइट एक्शन का खराब फल कभी आता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। सिर्फ डिमांड सिर्फ इतनी है कि आप डेली बेसिस पे राइट एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। जो करने की ज़रूरत है वो डेली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप डेली जो करने की ज़रूरत है, जो एक्शन रिक्वायर्ड है डेली लाइफ के अंदर, अगर आप वो ले रहे हो तो आपको कभी फल का सवाल उठेगा ही नहीं, वो उठना बंद हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद क्या मिलेगा वो उठना बंद हो जाता है, क्योंकि आदमी को पता चल जाता है कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ वो ठीक है और मैं उसके दम पे जो चाहूँगा वो अचीव कर लूँगा। राइट एक्शन पे आदमी को कॉन्फिडेंस आ जाता है। राइट एक्शन कॉन्फिडेंस पैदा करता है आदमी के अंदर। लेजी माइंड, डाउटफुल माइंड आदमी को डरा के रखता है, एक्शन नहीं लेना देता। So I am my own biggest enemy. Then how do I fight against my mind and put it to good use? What is the best rationalization for earning money? Earning money के बारे में मत सोचो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने एक हैंगिंग फ्रूट लटकाया हुआ है ना, हैंगिंग फ्रूट लटकाया हुआ है। सबसे बड़ी खराब चीज़ जो आदमी के लिए हुई है वो ये हुई है कि आदमी कर्म का मज़ा लेना भूल गया है। वो हमेशा बैठा हुआ सिर्फ पैसे के बारे में सोचता रहता है, और इसीलिए पैसा भी उसको मिलता नहीं है। मैं खुद एक एमएनसी में के अंदर काम करता हूँ, अमेरिकन टीम के साथ ही मैं काम करता हूँ। वो कभी पैसे की चर्चा नहीं करते और वो हमसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। उनका हमेशा फोकस होता है स्किल के ऊपर, काम को अच्छे से फिनिश करने के ऊपर, टाइम से ख़त्म करने के ऊपर, सही चीज़ों पे उनका फोकस होता है। वो हमसे कई गुना ज़्यादा कमाते हैं और हम हमेशा पैसे की चिंता में रहते हैं, लेकिन हम उनके आधे के आधे का आधा भी नहीं कमाते। सही चीज़ों पे फोकस रखो बॉस, सही चीज़ों पे फोकस रखोगे तो पैसा आएगा।
तो एक्शन नहीं लोगे, लाइफ तो बनी ही है एक्शन लेने के लिए यार। अगर एक्शन नहीं लोगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे। कौन कौन झेलेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस? वो भी तुम ही झेलोगे। और आपने ऊपर जो लिखा है कि हाउ डू आई फाइट अगेंस्ट माई माइंड, पुट इट टू गुड यूज़, तो उसका एक ही सिंपल रूल है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। अगर आपने अपने काम, अपने माइंड से सही, उसके अंदर एनर्जी है, अगर आपने उससे सही काम नहीं करवाया तो गलत काम वो अपने आप पकड़ लेगा। अगर आपने उसे किसी कंस्ट्रक्टिव स्किल वाले काम के ऊपर नहीं लगाया तो वो डिस्ट्रक्शन वाले काम की तरफ तो अपने आप चला जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दिस, फॉर दैट। बर्बाद होने में के लिए मेहनत नहीं लगती, बर्बाद तो आदमी अपने आप ही हो जाता है। रिमेंबर, पहाड़ पे चढ़ने के लिए, इसको ऐसे समझ लो, पहाड़ पे चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नीचे उतरने के लिए कुछ नहीं, एक धक्का लगता है सिर्फ। पत्थर को ऊपर से फेंक दो, वो अपने आप नीचे आ जाता है। हाँ, ऊपर चढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर कुछ लाइफ के अंदर एक स्किलफुल, एक वैल्यूएबल एसेट बनना है तो उसमें तो मेहनत करेगी, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारी जितनी भी किताबें हैं ट्रिक सिखाती हैं, ये सिखाती हैं, वो सिखाती हैं, कुछ नहीं है, सब बकवास है। काम करना है तो करना पड़ेगा, जब करना है तो करना है, उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं लगता। और मोटिवेशन जो लोग खोजते हैं ना, वो लोग खोजते हैं जिनके पास ऑप्शन है लाइफ में, जिसको मजबूरी है, जिसको परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, या जिसको लोन चुकाना है, या जिस आदमी को घर का खर्चा चलाना है, उसके पास ऑप्शन नहीं होता। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसका एक मतलब ये भी है कि मैं खुद को मोटिवेट कैसे करूं, इसका एक मतलब ये भी है कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वरना तो ये सवाल उठता भी नहीं। ये मतलब पिटीनेस जो है ना, ये जो पिटीनेस है, सेल्फ पिटीनेस, ये एक लग्जरी है आदमी के लिए। नहीं तो काम तो बॉस करना ही पड़ता है, तुम चाहो या ना चाहो, काम तो करना पड़ेगा। विचार और एक्शन में भावनाओं का भी कोई भूना, विचार और एक्शन डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं होते, बीच में भावनाएं होती हैं, बीच में इमोशंस होते हैं। बिना भावना के एक्शन नहीं, बिना इमोशन के एक्शन नहीं निकलता। इमोशन, रिमेंबर, इमोशन का मतलब क्या है? एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन किसी ने दी थी, मुझे याद नहीं किसने दी थी। इमोशंस का मतलब ही है एनर्जी इन मोशन। विचार तो याद रखना, थॉट ट्रिगर करता है इमोशन को, इमोशन ट्रिगर करता है एक्शन को। विचार से उठता है भावनाएं, भावनाओं से उठते हैं कर्म। गुड टू सी दैट नॉलेज सेल्फ इज बैक अगेन। हाँ, ये दूसरा चैनल है, नॉलेज शेल्फ भी चल रहा है, उस पर भी मैं दोबारा से वीडियो डाल रहा हूँ, और इनफैक्ट आज ही एक वीडियो अपलोड किया है उस पर भी। एंड गुड टू सी यू टू, गुड टू सी यू एज वेल बरवाल। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने फाइनली जो फर्स्ट वीडियो है वो उसे कंप्लीट कर लिया है। कल हम कॉन्वर्सेशन 2 के ऊपर जाएंगे, और इस वीडियो को हम देखेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग भी
डिस्कशन में इंटरेस्टेड हैं वो आके 10:30 बजे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं. ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, और कल मिलते हैं. जाने से पहले जो लोग भी चैट में हैं इस वक्त वो अपना नाम ज़रूर लिख दें और गुड नाइट लिख दें. मैं जाते जाते एटलीस्ट आप लोगों को हाय बाय कुछ बोल के जाऊँ. गुड नाइट दीपक. गुड नाइट राहुल. राहुल तो हैं ही. ओके, एनीवन एनीवन, नो वन. चलो तो चलते हैं फिर. गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं 10:30 बजे.